Good morning, friends. Welcome to the session. I'm just sharing my screen. So yesterday you had a good roller coaster ride down, और इस तरह का मार्केट हमें अभी देखना है. We are likely to stay in such sort of a market situations. Yeah, Harpreet, good morning. I'll just bring the chat in front of me. Okay. So is my audio loud and clear, everybody? Vijay ji, give me a yes. Jerry, Venkat. Is my audio and video both okay, everybody? Yeah, I'll either wait for you, yes or a no, friends. Done. So before we start, मैं disclaimer read out कर देता हूँ. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. We follow a process which first says that let's go and check the global headlines just once. We don't scan. हमें देखना नहीं है micro level पे किसने क्या बोला. Just एक बार headline देख लेते हैं. एंड आई ऑलवेज प्रीफर कि हेडलाइन जो हम चेक करते हैं वो investing.com में करते हैं बिकॉज इधर कवर हेडलाइंस जो रहती है वो डोमिनेंट रहती है. सो US stocks futures dip after trade representative says Trump Xi talks did not cover chip. तो ट्रेड टॉक्स में इतना कुछ खास आया नहीं है. ट्रम्प साहब चाइना गए हुए, सो दैट्स ओवर. कल डाउ जोन्स 370 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ. अभी अगर फ्यूचर्स देखते तो नेगेटिव है. सो लेट्स सी एशिया क्या दिखा रहा है अभी. देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है या एक ट्रैप भी हो सकता है कॉल राइटर्स का. तो आज का मार्केट हम उसके स्ट्रेंथ पे देखेंगे. लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड यस्टरडे. सो देखिए यूएस फ्यूचर्स 113 पॉइंट डाउन है अभी. हमारा नेगेटिव दिख रहा है. बोवेस्पा ब्राजील आप है. निकाय 1000 पॉइंट डाउन है, वेरी बैड. हैंगसेंग 263 पॉइंट्स है. अभी मैं नहीं भी देखूं तो क्या आपको लगता है गिफ्ट निफ्टी ऊपर होगा क्या नीचे होगा? व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? लेट मी चैट आल्सो. So I don't think Gift Nifty will be either flat to down or margin जो होगा it will be very very flat. So now let me go to Gift Nifty. So if I go to my Gift Nifty, गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो कल जो गिफ्ट निफ्टी में हमने देखा है ना वो था स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप का मतलब है इनडिसिजन. इनडिसिजन का मतलब है हाई लो के रेंज के आसपास वॉलेटिलिटी रहेगी. अभी हम देखते तो गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर है. गिफ्ट निफ्टी इज अप 50 पॉइंट्स. सो मार्केट इज लाइकली टू ओपन माइल्डली पॉजिटिव टू फ्लैट. देखिए ये ओपनिंग ही रहता है, उसके बाद हो सकता द करंट प्राइस एक्शन विल टेक ओवर. गिफ्ट निफ्टी से आप ज्यादा इंडिकेशन मत लो. आफ्टर दैट वी कम टू आर निफ्टी. देखिए निफ्टी ने एक उछाल तो दिया. अगर जो रेगुलर सेशंस में आते हैं, those who come in the sessions regularly, they will come to know that we have been talking about this gap. कितने जन ने ये कल गैप देखा था during the live trading markets? How many of you followed the gap? I'll wait for your yes or no. I'll come to Satyanarayan VIX. Oh sorry, I'm violating our own set rules. Now we'll go to India VIX. इंडिया विक्स, या इट्स वेरी रॉन्ग व्हाट आई डिड. डायरेक्टली निफ्टी कभी नहीं देखना चाहिए. सो इंडिया विक्स में अगर आप देखो तो मैं सब कुछ रिमूव कर सकता हूँ. ओके, शंकर सेज इट डिड. देखिए इंडिया विक्स में भी इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब क्या है? क्लोजिंग बीच में है. The high and the low are equidistant from the close. This is called a spinning top. Now, spinning top का एक ही मतलब हो सकता है. Either it remains in this volatile range, or either it will dip down to this level, which is India VIX,
or it will rise to hit the resistance. Getting my point? So India VIX is showing yesterday there was a cool off, बट क्या ये कूल ऑफ हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड दिखा रहा है इंडिया विक्स में कि वॉलेटिलिटी कूल ऑफ होगी? आई डोंट थिंक, द आंसर इज नो. देखिए हमेशा जब भी एक स्पिनिंग टॉप आपको दिखता है ना, whenever you see a spinning top candle like we have, I'll remove this, it says that markets may again the volatility surface because spinning top has a very big range, right? And within this range मार्केट ट्राइज टू टेस्ट द प्रीवियस, अगले दिन का लो के आसपास भी जाता है, अटेम्प्ट करता अगले दिन का हाई के आसपास भी. तो प्रीवियस डे का जो हाई और लो का रेंज रहता है ना, वो काफी बड़ा रहता है व्हेन इट कम्स टू स्पिनिंग टॉप. सो दैट वे विक्स, इंडिया विक्स इज शोइंग वॉलेटिलिटी विल बी देयर. नाउ आज कल इंडिया विक्स का 14th मई का ओपन एंड हाई इटसेल्फ वाज सेम. So that's India VIX, which is saying that volatility will be there. Volatility अभी नहीं जाएगी. देखिए कभी भी इंडिया विक्स आपको इस तरह का रेंज में दिख जाएगा ना, which is a strong indication of a volatile market. When India VIX is trending up, Nifty is trending down. When India VIX trends down, Nifty trends up. The moment you see India VIX going in a sideways, make a note that now volatility will be there. So we have done with India VIX. Now we'll go to Nifty. So I just want to see India VIX on a 15 minutes time frame chart. Yes. और इंडिया विक्स में आज आप लाइव ट्रेडिंग पे इंडिया विक्स का भी एक चार्ट टाइल्स पे डाल दो एंड मेक श्योर यू क्रिएट अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस इन इंडिया विक्स. ओके. The purpose of creating this trend line is that if India VIX tries to break this high, that means there will be some sort of a cool off in the market. अगर India VIX ये trend line तोड़ के ऊपर जाता है तो मार्केट में नरमी रहेगी. I always do that. मान लीजिए कहीं पे भी आप देखिए, हम अभी जो प्लान कर रहे हैं हमें जाके चेक कर लेना प्रीवियसली अगर ऐसा किया रहता तो क्या रहता. So previously had I done this over here ऐसे ट्रेंड लाइन, तो इंडिया विक्स ने यहाँ पे तोड़ा था ये ट्रेंड लाइन. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो मेक श्योर इंट्राडे ऑन अ 15 minutes टाइम फ्रेम or a 5 minutes, I don't know what type of trader you are, make sure that the India VIX is open. All brokers platform allow, so we at Stocko Incred Money also allow. So make sure if you are trading indices, India VIX is on the left, the chart. इंडिया विक्स है ना, आप एक इंडिकेटर होना चाहिए वॉलेटिलिटी के लिए. Why I'm saying that? I'll show you. Let me try to log in my platform, which is Stocko Incred Money. So just how many of you yesterday attended the Bollinger Band session? Give me yes or a no. Just give me a minute. I'll just log into my platform. So it's a very a good platform. It's like you can log in with your QR code. Just give me a minute. So yes, Satyanarayan says yes. Okay. So ये setup, see the setup is as per the market conditions, and I want the setups to be there in front of you. Right. So I will go to trading view, which is my stock or trading view. Okay, Harpreet says sir, IV change would be more apt or VIX for short term trader. देखिए हरप्रीत, I do agree with IV, but देखिए हमारे पास everybody does not have access to the IV graph. So मैं तो VIX फॉलो करता हूँ. So on the left, please keep India VIX. So now I think the platform में BOD process चल रहा, that's why data is coming like this. Okay, and make sure VIX is always on the left. If I remove this part and मैं आपको दिखाता हूँ, and अगर मैं निफ्टी रखता हूँ
हरमीत, मैं तो ट्रेंडिंग ओआई का फॉर्म बिलीवर हूँ. या सरिता भारती, गुड मॉर्निंग. You are late today. Please watch the recording. And this is your Nifty, both on a 5 minutes. Okay. See, yesterday, अगर ये जो विक्स यहाँ से गिरा ने एक बार आपका, just see the movement. When VIX was down yesterday, Nifty was up. So you have to use VIX as an indicator in the current markets. Got it, everybody? देखिए हरप्रीत, हम वो डेटा मैं ज़्यादा देखूंगा जिस पे मैं हिस्टोरिकली बैक टेस्ट कर सकता हूँ और जो विजुअली मेरे सामने है. गॉट इट हरप्रीत? या आप आईवी भी यूज कर सकते हो, परसेंटाइल भी यूज कर सकते हो, बट आई प्रिफर विक्स बिकॉज वो टोटल मार्केट का मुझे एक ये दिखाता है. So that's VIX. VIX का ये trend line mark कर लो. Everybody mark this trend line. If it breaks this, make sure you take a note of it. After that, let me come to my Nifty. So Nifty, this gap more or less, Shankar says he observed this gap, and this gap from the current price is 94 points up. So on a 15 minutes charts, this gap I will stick to it. देखिए, today is a Friday. Friday में क्या होता है? It's not always, but you have to observe there might be pressure in the market from the option sellers because Saturday, Sunday का 2 दिन का थीटा डीके रहता है. जरूरी नहीं है कि खुलते ही बेचो, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. So this is the gap. मेरा पहला resistance रहेगा. Then I'm not able to locate any resistance all the way up till here. Right? This is my 15 minutes. Then एक pivot points रहता मार्केट में. Pivot points means some prominent low which is visible to all. These are called pivot points. So this is my pivot point. Once this breaks, then probably I might see weakness in the markets or a minor dip in the market. Second thing you have to आपको जो करना है, now we have formed a channel. So if I take this low and if I extend this high, देखिए सारे touch point मिल रहे हैं. Little bit whipsaw हो रहा है. So I'll just make this background a bit more lighter. Yes. So now this is our setup for Nifty. Over here, the three things which we have to use today for today's trading, support and resistance हमें पता है. One is plot the VWAP. VWAP के साथ चाहिए तो एक momentum indicator डाल लो. I leave that to you, whichever you use. Third is trending OI में ट्रेंडिंग ओआई प्लस सेंटिमेंट आपको देखना है. So Sarita, now you know na how to set up your this trending OI ka setup. Sarita, you take the ATM and then 6 strike price above, 6 strike price below. Give me either a yes or a no, Sarita. Fine. Okay. I don't think Sarita is there today. Got it. So is the setup in Nifty very clear? Please plot first the VWAP, second any momentum indicator which you want, third is trending OI and OI sentiments. That's going to be the setup for the day. If everybody give me a yes, then I'll move to now Bank Nifty. Pivot level तोड़ने के बाद नरमी आती है. Remember that. और ये गैप आज भी परेशान करेगा आपको. Now let's go to Bank Nifty. बैंक निफ्टी में अगर हम डेली में जाते हैं ना, तो बैंक निफ्टी भी देखिए ये गैप तक तो आया, ड्रॉपर लाइन ओवर हियर एंड ड्रॉपर लाइन एट लास्ट. देखिए लास्ट 2 दिन का जो लो है ना, इट्स अ मैचिंग लो. कैन यू सी दिस? दोनों दिन का लो सेम है. एक बार ऐसा मैचिंग लो दिखता है तो वो हमें क्या बताता है फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव फॉर वेरी शॉर्ट टर्म फॉर अ डे और टू, दैट्स द सपोर्ट. अगर ये मैचिंग लो टूटता है देन विल कम टू फिल दिस गैप. और सामने गैप है. और कल देखिए अगर बैंक निफ्टी में 53,200 और 54,400 करीब करीब 1200 पॉइंट्स का
हाई और लो का मूवमेंट आया, सो बाय इटसेल्फ सेज वी आर इनटू अ हाई वोलेटिलिटी रिजिम। वो 50-100 पॉइंट वाला मार्केट नहीं है, पेशेंस रखो, सेटअप के लिए वेट करो। अगर 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, हम कितने पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं? 100-200 पॉइंट्स के लिए, राइट? वो आपको मिलेंगे पेशेंस के साथ। उसके बाद में 60 मिनट्स पे जाता हूँ, डेली का मार्किंग में छोड़ नहीं रहा हूँ। तो ये गैप का रेजिस्टेंस मेरा इंटैक्ट है, हमने कल भी देखा था। भले मार्केट ऊपर आया, बट ये कल गैप से थोड़ा झटका आया था, थोड़ा सा वी गॉट अ नी जर्क रिएक्शन। आफ्टर दिस 60 मिनट्स का ये हाई मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है। देखिए 60 मिनट्स पे मेरे को डिमांड यहाँ से पहले कहीं नहीं है, सपोर्ट विच इज यस्टरडेज लो। तो ये मेरा फर्स्ट मार्किंग हो गया। बेस्ड ऑन डेली मैंने एक रेफरेंस बनाया, इन 60 मिनट्स पे थोड़ा फाइन ट्यून किया। बट ट्रेडर 15 मिनट्स 60 पे नहीं ट्रेड करते, दे गो टू 15 मिनट्स। तो ये मेरा 15 मिनट है। तो 15 मिनट में ये मैं गैप का कैंडल ले लेता हूँ, और ये मुझे नहीं लगता इसके ऊपर जा सकता बैंक निफ्टी। आई एम फाइंडिंग इट टफ। और यहाँ पे भी आपको पिवट पे ध्यान देना। पिवट मतलब ऐसा पर्टिकुलर लो जो पूरे दुनिया को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। इसमें होता क्या है ना, सबके स्टॉप लॉस इधर ट्रिगर रहते हैं तेजी वाले के लिए, तो वो निकलते हैं ना, तो एक सेलिंग वाला माहौल थोड़ा डिप का बन जाता है, भाव छोड़ता है मार्केट। सो मैं ये लाइन, मुझे प्लेन लाइन चाहिए, यस, फाइन। सो निफ्टी का भी ये सेम लेवल आ रहा था, इफ एनीबॉडी रिमेंबर बैंक निफ्टी का, फाइन। तो यहाँ पे आपको वीवैप आज यूज करना है। देखिए वीवैप में आप अगर कोई भी एक एवरेज डाल दो, Venkat says, yes, I'm using Stocko. Then Venkat, make sure you make a very professional use of this Insta options, Venkat. Don't miss out on Insta options. And then as we follow the plan, which is the trading titles at Stocko Incred Money, we go to our options data. We go to our first the trending OI, and first thing you have to see is select the strike price. Got it? This is the first thing you have to do. And कभी भी देखिए कभी भी market when it's at a support or a resistance, at that time you go to option chart. Let's say Nifty is at a resistance which is 23,700. See this chart and come back over here. If there are more call writers than put writers, then resistance is intact. If there is a crossover coming, that means that resistance is getting weak, might be taken out. So all of us now know how to use it. Those who don't know, make sure I have recorded full one hour video on how to use OI sentiments, and it's, trust me, in this volatile market, it's a great tool. How many of you would agree? Those who come regular and use it regular, like Venkat says, I am using it. So then you'll have to use the trending OI in a platform which is Stock Incred Money Insta Options platform, and then you have to measure the sentiment. This is in trending OI. Just keep on checking the sentiments part. Okay, so that's the sentiment. Make sure and you go and change the strike price. Is currently it might be wrong. So clear all selection. See where market opened, like Sarita explained. हरप्रीत says use OI also very helpful. Yeah, हरप्रीत मैं उसको बहुत closely देखता हूँ हरप्रीत. So make sure you set up the strike price and then you are done for the day. That's how the markets are. So this pivot both on Nifty and Bank Nifty पे आपको ध्यान देना है. इसको आप इग्नोर मत करो. आज ये जैसे ही टूटा नरमी स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक नहीं टूट रहा मार्केट ये रेंज में रहेगा. देखते ये गैप 54,500 निकलता है कि नहीं. वो एक रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा, बहुत फाइन. और फ्राइडे को जनरली मार्केट पे प्रेशर्स रहते हैं. और कल देखिए, कल का जो मूव है, मैं तो इसको एक शॉर्ट का बर्स्ट बोलूंगा. कॉल राइटर्स पैनिक किए बिकॉज मार्केट ऊपर आया, एंड यस्टरडे यू हैड सेंसेक्स एक्सपायरी. तो इस तरह का एक्सपायरी डे स्ट्रेंथ जो है वो मैं आइसोलेशन में देखता हूँ, नॉट इन ओवरऑल. और आपको भी एक बार ऐसा करना है. सो ऑल सेट फॉर द डे. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. शाम को फिर मिलेंगे 3:45 पे. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. देखिए कल भी अगर हम देखते तो मार्केट खुला फाइन. मॉर्निंग वी हैड एनालाइज दिस लेवल. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यहाँ पे खुल के एक नीजक डिप दिया जोर से. सो
All we can say is for the morning hours as market trades, and then you have to pick up your own systems. I can only mark you the levels, the trends, what tools to use, then it's up to you. Fine. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day, everybody.